This is OnePlus Nord 2T. Typical black box. Let's open it. This is OnePlus Nord 2 स्टिकर जो हमें कोई काम की नहीं, पूरी पुस्तक बात है जो कंपनी देती है, हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी जरूरत होती है। फिर आते हैं OnePlus का मेंबरशिप कार्ड। लेट्स ओपन द अनदर compartment. Oh, this is a 80-watt super fast charger and Type A to Type C charging cable. And this phone has 4500 mAh battery capacity and 8-watt fast charger need 27 minutes to full. So good and average quality, and some textures are unwrapped the phone. Weight distribution is so good and light, like not to in hand, feeling so good. बैक पैनल आज प्रोटेक्टेड विथ गोरिल्ला ग्लास 5, जो थोड़ी ऊपर से गिरेगी या गिरने पर कुछ भी नहीं होगा। Let's check the ports and bottom. Left hand side have color slider and power on off button. क्या है नीचे है हमारा टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक वाज रिमूव एंड स्टीरियो स्पीकर एंड सिम कार्ड ट्रे, और ये सिम कार्ड ट्रे हाइब्रिड है। राइट हैंड साइड वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड ऊपर माइक्रोफोन है। लेट्स चेक द डिजाइन। द बैक वाज मैट ब्लैक एंड स्मूथ structures. It enhanced the premium looks of the phone. Triple camera setup and camera position was similar to Note 2. आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले वाज 6.43 इंच FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले और आता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड डिस्प्ले वाज गोरिल्ला ग्लास पिक्चर्स प्रोटेक्शन। देन चेक आउट द कैमरा। फ्रंट वाज 32 मेगापिक्सल पंचोल कैमरा, जो पंचोल डिजाइन हो वो इम्प्रूव द मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। एंड द रियर कैमरा वाज 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, 8 मेगापिक्सल। Then at the specification, this is 8GB RAM, 128GB storage, and expand up to 13GB is RAMs. And the processor was Dimensity 1300. It improved the gaming experience. अब आते हैं कनेक्टिविटी। दिस फोन हैज Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dual 4G VoLTE and Wi-Fi calling support, and 5G is also supported. ओवरऑल देखा जाए तो दिस फोन हैज सो गुड।